Hello. 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 Yes, sir. Yes, yesterday we have already started the second unit, and today most probably we are going to do the problem based on Rolle's theorem, Lagrange's theorem, and Cauchy's theorem. Maximum problem we'll do it today. Okay. Uh, we start our work that we have to check the three conditions for the Rolle's theorem. First of all, f of x is continuous function, f of x is differentiable, and f of a is equal to f of b. So let us start our work. We need not to check the first condition because already exponential function is a continuous function, sin x is a continuous function, and cos x is also a continuous function. So aggregate we say e power x into sin x minus cos x is continuous in closed interval pi by 4 comma 5 pi by 4. This is all about the first point. We need not to check that. But if you talk about the second point, definitely we have to check. F dash of x value we have to check. We have no option. That means we have to apply UV formula. Considering first function u as e power x as it is. Now derivative of these two functions, that is derivative of sin x is cos x, and derivative of cos x is minus sin x, but here we have already one minus sign, together becomes plus. First function, derivative of second function is done, plus second function we have to keep it as it is, that is sin x minus cos x, we have to keep it as it is. And now the derivative of e power x must be e power x. So let us simplify few steps here. Taking e power x common, we are left with cos x plus sin x plus sin x minus cos x plus sin x minus cos x. So what to do here is this one with this cancel. Sin x plus sin x is 2 sin x. So aggregate we are getting our answer is 2 e to the power of x into sin x. Okay. So we should write f dash of x exists because we are getting some value exists on open interval pi by 4 comma 5 pi by 4 5 pi by 4. Okay. So now third condition we need to check f of a value. Here you see this is our a value, this is our p value. F of a means f of pi by 4. That is equals to, you see here, wherever x is there we put pi by 4, and here also we get sin pi by 4 minus cos pi by 4, cos pi by 4. But we know that e power pi by 4 we can't solve it. That must be as it is. And sin pi by 4 value is 1 by root 2. If you see the calculator, we will get root 2 by 2. That is 1 by root 2 only. And cos 45 degrees also 1 by root 2. These two are cancelled. Answer is 0 into anything is 0. F of a value is 0. Now if you check it, f of b value, f of b value here we have to check it. F of 5 pi by 4. 5 pi by 4 means e to the power of 5 pi by 4. E to the power of 5 pi by 4 into sine pi by 4 is nothing but minus 1 by root 2. And cos 5 pi by 4 is plus 1 by root 2. These two are again cancelled. We're getting one more time 0. It means, what do you say? F of pi by 4, that is f of a,
is equal to f of 5 pi by 5 pi by 4, which is equal to f of b. Please reply for its steps. Otherwise, I don't know whether you are there in the class or not. So what do you say? Hence, f of x satisfies all conditions of f of x satisfies all conditions of Rolle's theorem. All three conditions also you write, or all conditions of Rolle's theorem. Of Rolle's theorem. Then Rolle's theorem. Then there exists a point. There exists a point C belongs to A comma B. A value is pi by 4. B value is 5 pi by 4. C belongs to A comma B such that f dash of C is equal to 0. F dash of C, from where we can get? F dash of C value we can get from here, because we know that it is f dash of x. That can be easily obtained by replacing just x with c. So f dash of c means we get 2 e power c into sine c is equal to 0. So 2 will go that side, become 0. E power c will go that side, become 0. All the values will be going that side, become 0. Sine c is equal to 0. So sine c is equal to, here two options are available. Either you can write sine 0 is equal to 0 in the first option, or you may have one more option is here. Sine c is equal to, in place of 0, you can also write as sine pi. Sine pi value is also 0. So what I want to tell you, this into both of the cases, we are getting the value of c is equal to 0. Here we are getting the value of c is equal to pi. Now let me check which value lies in this interval. If c is equal to pi is the only value, we can say, therefore c is equal to pi should lie between 45 degree to 5 pi by 4 means how much? Can you tell me, anybody? 5 pi by 4 कितना होता? हाँ, 360 से ज़्यादा हो जाता है. So it's definitely 80 degree, 180 degree will lie between this interval. So it's a 5 pi by 4. So definitely we say, therefore, we write here, Rolle's theorem verified. Rolle's theorem verified. This is the end of this topic and the problem, that is about the problem. Rolle's theorem मैं आपको फिर से एक बार बोल दूं, आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर दीजिए, आपको सो मेनी क्वेश्चन मिलेंगे रोल्स थ्योरम पे. कंसेप्ट मैं आपको दे दे रहा हूँ, प्रॉब्लम आप लोग करना है. टाइम आपके पास ज्यादा है, तो अच्छे से देख लीजिए, मतलब सॉरी, टाइम आपके पास कम है, तो वो हिसाब से आप लोग कर लो. सो सेकंड पेज में जाके मैं डायरेक्टली लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT, Lagrange's mean value theorem. What is the statement? And we have to discuss the problem also today only. And आज कॉचेस को भी खत्म करने का कोशिश करेंगे. What is the statement say here? Statement. So many problems are available. As a sample, we are doing some questions. So here statement is, let f of x be a function. F of x be a function. F of x be a function such that some special properties are there, and the two, first and second, must be same. F of x is continuous. F of x is continuous. It means if you take a graph between this interval a comma b, it must be continuous. Means no
breaking will be there. The graph will show a continuity. F of x is differentiable, or we say it is derivable on open interval a comma b. Only two conditions are there. Then there exists a point. There exists a point. C must belongs to a comma b such that sometimes statement also asking in exam पूरे फर्स्ट यूनिट के पूरे स्टेटमेंट, सेकंड यूनिट के पूरे स्टेटमेंट और फिफ्थ यूनिट के पूरे स्टेटमेंट कहीं पे लिख लो आप, अच्छा रहेगा. एफ ऑफ बी minus f of a by b minus a. This is your statement of Lagrange's mean value theorem. So directly we see the problem. एक और चीज आपको हिंट में दे रहा हूँ. Any inequality problems में अगर inequality आपको दिखता है, it means वो सिर्फ और सिर्फ Lagrange's mean value theorem से ही सॉल्व होता है. Inequality के प्रॉब्लम Lagrange's mean value theorem से ही सॉल्व होते हैं. अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है. Using Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem. Prove that. Look at that condition. कैसा है क्वेश्चन में? b minus a by 1 plus b square is less than tan inverse of b minus tan inverse of a is less than b minus a by 1 plus a square plus a square. And that's it. Now solution. अभी देखिए अपन Lagrange's mean value theorem अगर मेंशन नहीं भी करा क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल, तो भी आप क्या करना है, जो भी इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ Lagrange's mean value theorem से ही सॉल्व. So now we'll see here, f of x should be required, and that too interval also required. Then only we can check the condition, and then we say if there exists a point, then this formula is be applicable. But here in this question we don't have any f of x. So according to the requirement, according to our problem, we have to choose, we have to assume our f of x value is equal to tan inverse of x. And specifically interval is also not given. If interval is not given, we assume our interval is general interval, that is a comma b. Now we need to check the two conditions. Number one, f of x is continuous. If it's a continuous, there is no need of any checking. First condition to check करने का maximum chances आपको नहीं रहेगा. I'll tell you where is the situation which is not continuous on closed interval a comma b. We need not to check for this. Second condition is we have to find out its derivative, which is compulsory. So derivative of f dash of x. F dash of x is equals to tan inverse of derivative is 1 by 1 plus x square. So exist on open interval a comma b. Two conditions satisfied. So simply we say by Lagrange's mean value theorem, there exists a point. मैं थोड़ा सा अलग कलर में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ उसका रीजन भी आपको समझ आएगा बाद में. C must belongs to a comma b such that f dash of C is equals to, अब सब लोगों ने ईमेल से दिख रहा है, इसका भी रिप्लाई नहीं आता. f of b minus f of a by b minus a. जबरदस्ती सर पढ़ा रहे, चलो खाली खामोश सुन लेना है बस.
f dash of c means 1 by 1 plus x can be replaced with c, so it's a c square. F of b value, if you see tan inverse of b we get, f of a value is tan inverse of a we get, okay, by b minus a must be as it is, by b minus a must be as it is. Equation number 1 we called it as. After that, what to do? You have to use this specific condition. What it is? C belongs to a comma b. It means the value of c should lie between a and b. That is in the next page. We use that condition, that is, since c belongs to a comma b, it means the value of c should lie between a and b. अब आप देखिए, we have to get this format, ये वाला, मतलब c तो है, c स्क्वायर करना मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 1 ऐड करना फिर रेसिप्रोकल, वैसा करना है. So next step is squaring. A square is less than c square is less than b square. Now adding 1 means 1 plus a square is less than 1 plus c square is less than 1 plus b square. Now taking reciprocal means 1 by 1 plus a square. The inequality will change. Less than will be converted to greater. 1 by 1 plus c square is greater than 1 by 1 plus b square. Now what to do here is we have to use the facility. What is the facility here? We know the value of what? This one. This value. Tan inverse of b minus tan inverse of a by b minus a is the value of this one. We have to put, you have to replace. This is greater than tan inverse of b minus tan inverse of a by b minus a is greater than 1 by 1 plus b square. Now multiply b minus on both sides. B minus a by 1 plus a square is greater than tan inverse of b minus tan inverse of a, okay, is greater than b minus a by 1 plus b square. Now change the order. A is greater than b को मतलब सबको पूरा उल्टा कर दो, इसको इधर ला. b minus a by 1 plus b square greater than will be changes to less than tan inverse of b minus tan inverse of a is less than b minus a by 1 plus a square. Now this is our required result. You can see that this one we have to prove. So Yes. Lagrange's mean value theorem से करना होगा, कैसा मालूम होता? इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम तो हम Lagrange's mean value theorem से ही कर सकते हैं. We don't have any other option. जी सर. सर आप प्रूफ भी कराते बोले थे. हाँ, प्रूफ भी कराएंगे. प्रूफ करा दो अभी. चलिए, राइट, याद दिला देना आप. चलो आप बोल दिए तो करना ही पड़ेगा. स्टूडेंट की डिमांड आई तो मैक्सिमम तो मैं फुलफिल करता हूँ, कोशिश करता हूँ फुलफिल करना. राइट, चलो स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem. तो स्टेटमेंट तो आपको पता है, मगर फिर भी आप लिखिए तो सही रहेगा. स्टेटमेंट statement is let f of x be a function, let f of x be a function, let f of x be a function. अजीम आप क्या करो, रोल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट थ्योरी पार्ट है ना, ग्रुप में डाल दो. जी सर. सर ये आप बोले थे ना इनइक्वालिटीज बोल के, तो कैसा पहचानना जरा इनइक्वालिटीज बोलना सर. इक्वालिटी नहीं है, जो लेस देन है ना, ये देखो लेस देन या ग्रेटर देन ये सिंबल यूज हो रहा था, इनइक्वालिटी. अच्छा ओके. इक्वल टू रहता, इक्वल टू कहीं भी नहीं दिख रहा. देखो लेस देन ग्रेटर देन के क्वेश्चन को उससे कर. f of x is, ठीक. कल भी बोला ना मैं ये पॉइंट,
हाँ जी सर, बोले सर कल। continuous on close interval a comma b, f of x is differentiable on open interval a comma b, but condition तो नहीं है. Then there exists a point c must belong to a comma b such that f dash of c is equals to f of b minus f of a by b minus a. अब रोल्स थ्योरम में और उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? The difference is here we don't have third condition. उसमें थर्ड कंडीशन है f of a is equal to f of b, है ना? तो उसी का एडवांटेज लेके अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं आसानी से. What do you mean by this? Third condition is not there. अभी एक बार मैं रोल्स थ्योरम को बता देता हूँ यहाँ पर आपको रफली. f of a and f of b is equal. Here a value, here b value. So this is f of a and this is f of b. F of a and f of b is equal. F of x is continuous. F of x is differentiable. Then there exists a point c belongs to a comma b such that f dash of c is equal to 0 हो तो we can draw a tangent which is parallel to x axis. तो यहाँ पर f of a is equal to f of b वाली कंडीशन है. इसको एज ए एडवांटेज लेके अपन ये थ्योरम को आसानी से प्रूव कर सकते हैं. तो वो चीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या मतलब? f of a and f of b is not equal. यहाँ पर मतलब वही है. अच्छा, एक और चीज इसके अंदर अपन थर्ड कंडीशन को ऐड कर दिए. समझ में आ रहा? एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल भी है. इसके अंदर अगर अपन किसी तरह से ये कंडीशन को ऐड कर दे, कौन सी वाली? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ, एक काम करेंगे एफ ना लेके कोई और फंक्शन ले लेंगे. ऐसा होगा. इसमें थर्ड कंडीशन अगर अपन मर्ज कर लिए, ये रफ वर्क है देखो. फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. इफ यू ऐड दिस कंडीशन then you can use, by Rolle's theorem you can use phi dash of c की वैल्यू को 0 अपन यूज कर सकते हैं. राइट, इसी को प्रूफ को मैं आगे बढ़ाता हूँ. प्रूफ में स्टार्ट कर रहा हूँ उसका. थर्ड कंडीशन को इंसर्ट करने के लिए प्रूफ स्टार्ट होता. ओके, तो इसके लिए अपन कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे चूज, या फिर चूज बोल के नहीं बोलेंगे और डिफाइन बोलेंगे. एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं. डिफाइन ये फंक्शन, define a function phi such that phi of x is equal to, एक ये वैल्यू को आपको मेमोराइज करना पड़ता. एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स प्लस ए. इट्स इक्वेशन नंबर 1 where phi is chosen for this condition. Phi of a is equal to phi of b. ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपन एक फंक्शन डिफाइन करें phi of x. ये वेरी इंपॉर्टेंट. phi of x is equal to f of x plus a. यहाँ अब आप देखिए f of x तो कंटिन्यूअस है, यहाँ पर दिख रहा है. f of x भी डिफरेंशिएबल है. a क्या है? एक आर्बिटरी कांस्टेंट. कांस्टेंट तो नो मीनिंग एट ऑल. So if f of x is continuous, then phi of x is continuous. If f of x is differentiable, then phi of x is differentiable. And phi of a is equal to phi of b की कंडीशन तो पहले से अपने पास है. मतलब अपन इसको बनाए इसलिए तो अब हम क्या लिखना? Therefore, the function phi satisfies
all conditions of function phi satisfies all conditions of Rolle's theorem. All conditions of Rolle's theorem. Then there exists point C belongs to A comma B. वही जो पुराना लिखे थे वही लिख रहे कुछ भी नहीं, such that phi dash of C is equal to 0. This is taken as second equation. अब जो दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर ले तो आपका रिजल्ट प्रूफ है, ठीक है ना? Now look at that. We have what we have taken previously condition phi of A is equal to phi of B. ये फंक्शन में phi of x की वैल्यू f of x plus a है, तो phi of a की वैल्यू क्या होती? f of a plus a. a x भी ले लेंगे शायद, इसके साथ एक x भी ले लेंगे, a x बोल के ले तो इजीली हो. a is equals to f of b plus a into x की प्लस पे स्मॉल. इसको सिंप्लीफाई करो. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको इधर भी जाती, इसको इधर. तो क्या a कैपिटल A स्मॉल a माइनस कैपिटल A स्मॉल b is equals to f of b minus f of a. इसमें से कैपिटल A अगर कॉमन ले लिया तो गेट a माइनस b, और अगर माइनस को भी कॉमन ले ली तो b माइनस a, माइनस कॉमन ले ली तो b माइनस a is equals to f of b minus f of a. Then what do you say? What is the value of minus a? माइनस a की वैल्यू क्या आ जाती है? f of b minus f of a by b minus a. ये माइनस a की वैल्यू है. इसको एक इक्वेशन नंबर 3 बना, ठीक है? अब ये रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, जो कंडीशन है phi of x is equals to f of x plus a of x ले लीजिए. phi of x is equals to f of x plus a of x. This one we have to differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Then we say phi dash of x is equal to, it is f dash of x plus differentiation with respect to x, to x की value a आ जाए, a into 1, but no need to write. And now x को c से replace करेंगे. f dash of phi dash of c is equal to, get f dash of c plus capital A. But already we know that phi dash of c की value is 0. 0 is equal to f dash of c plus capital A. From this, if you bring capital A that side, it becomes minus a is equals to f dash of c. और इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 4. 3 और 4 को देखो, दोनों माइनस ए के वैल्यूज है ना, है या नहीं है? From 3 and 4. Yes. From 3 and 4, if you merge these two conditions, 3 और 4 को merge कर दिए तो we have proved that f dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a, which is the proof of this Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem का proof complete हो गया. A
हम अपन लिखेंगे नेक्स्ट कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट और नेक्स्ट सेक्शन में उसको भी प्रूफ करें। तो एक काम करेंगे वो दोनों एक ही बार होता है, स्टेटमेंट अलग लिखना चाहिए तो ठीक है, अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, तो एक ही बार में स्टेटमेंट के साथ प्रूफ भी हो जाता, तो दोनों काम एक ही बार में था, अलग से प्रूफ लिख के फिर अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जी सर। करना है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम को भी प्रूफ करना है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा टाइम है अपने पास, तो आई कैन गो फॉर वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, फिर नेक्स्ट सेक्शन में कॉचीज को भी अपन फिनिश कर सकते हैं। जी सर। कोई भी क्वेश्चन होता जब थ्योरी पार्ट लिखो तो वो सेट करते ग्रुप में आपको। अच्छा ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है ये, इसको वो भी देखो जरा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। Geometric interpretation of this. What the geometrically this theorem is showing. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो दो तीन फिगर्स बनाना पड़ेगा। So now I'm using that condition that where f of a and f of b are not equal. Here f of b equal नहीं है. It means that या तो f of a बड़ा है, f of b छोटा है, या फिर f of b बड़ा है, f of a छोटा है। वो कंडीशन को अपने यहाँ पर यूज कर लेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। So this one you see x-axis, this is a point A, this is f of A, this is a point B, this is f of B, this is f of A corresponding to the point A. This is y-axis origin. तो f of x तो कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, f of x तो कंटिन्यूअस है, f of x डिफरेंशिएबल भी है, बट f of a f of b इक्वल नहीं है, तो द पॉसिबल ग्राफ विल बी लाइक, क्या हो सकता है ऐसा, या हो सकता है ऐसा। तो व्हाट टू डू, एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट डू यू से c बिलोंग्स टू a कॉमा, मतलब कोई एक पॉइंट है a और b के बीच में, वहां से जो टेंजेंट बता दो, दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके एक टेंजेंट बने, एक और ये दोनों पॉइंट को मर्ज करके एक टेंजेंट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, the coordinates of these points are, this is suppose taken as a, the coordinates are a comma f of a, here the coordinates of b are b comma f of b, and this is a point, this is a tangent, Rolle's theorem से एक tangent आप ले रहे वो f dash of c है, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये कैपिटल A वैल्यू कैपिटल B वैल्यू, coordinates are same. So next time you will see, we know that a value is equal to, now we got it as a comma f of a, b value we got it as b comma f of b, and the formula of slope intercept formula, you know, slope form x1 y1 x2 y. What is the formula, slope formula?
denoted with M1. Formula is y2 minus y1 by x2 x2 minus, minus x1. which is equals to y2 value is f of b minus f of a by b minus a. This is M1. Now M2. What is the value of M2? That is f dash of c. ये लाइन का स्लोप ये वाला, ये डॉट 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 करके लिखा नाम ये. So we know that you see these two lines are parallel. AB से जो pass हो रहा वो line और f dash of c, these two lines are parallel. So since lines are parallel means what do you say? Their slopes are equal. Means M1 is equals to M2. Then if you replace the values of M1, that is f of b minus f of a by b minus a is equal to M2 value f dash of c. We have already again proved in geometrical interpretation में भी फिर से अपन ये कंडीशन को प्रूफ करें. तो ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा हूँ? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, अगर f of a f of b इक्वल नहीं है तो f of a और f of b से जो लाइन पास हो रही वो टेंजेंट के पैरेलल रहती जो x एक्सिस के पास है, x एक्सिस से पास हो स्लोप के पैरेलल हो. दैट इज द प्रूफ ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, खाली फिगर्स उतार के थ्योरी आप अपने ओन से भी लिखे तो भी मार्क्स मिल जाते. ओके, सो in the next section I will go for the proof of Cauchy's mean value theorem and we'll do the problem of Cauchy's mean value theorem, and if possible we have to start the Taylor's theorem also, and your next section will be approximately half an hour break, then we have to start. ठीक है. If any student did not join for any reason, let us tell me, otherwise मैं थोड़ा बाद में शेड्यूल कर दूँ. नहीं सर, अब हाफ एन आवर के बाद है बोले क्लास आप? हाँ, थोड़ा इसको ब्रेक होना पड़ता है ना, जूम मीटिंग कंटिन्यूअस नहीं कर सकते ना, जी सर, थोड़ा ब्रेक देना. आप ले सकते हैं कंटिन्यूअसली ले सकते. ठीक है, राइट. Let us end up this one. जी सर.